Good morning, dear students. In this video, you will learn about natural resources. Natural resources, before knowing them, we must know what are resources. Resources, you can say anything that is useful to us. It is called resource. And natural resources are the things that we get from nature. So let's continue. In this chapter, you will learn what are renewable and non-renewable resources, the uses of natural resources, how to conserve resources. Students, things that we get from nature are called natural resources, as I have already told you. Anything that we get from nature is called natural resource. Sunlight, water, wind, forests, and minerals are some examples of natural resources. All these are natural resources. They are of two types. Natural resources are of two types, renewable and non-renewable. So what are renewable resources? Renewable resources are inexhaustible. Inexhaustible means something that does not finish as it exists in a huge quantity. ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अवेलेबल होती है और वो ख़त्म नहीं हो सकती चाहे हम उसे कितना भी यूज़ करें. These resources are found in plenty and do not reduce in quantity when used again and again. The examples of renewable resources are sun and wind. जितनी भी सनलाइट आप यूज़ करें या जितनी भी विंड आप यूज़ करें तो वो कभी ख़त्म नहीं होती. दे आर renewable resources. Next are non-renewable resources. Non-renewable resources are exhaustible. Exhaustible means if something is used, it can be used up or finished. If we use something again and again, it can be finished. So that is exhaustible. So non-renewable resources are exhaustible means they can finish. They exist in limited quantity and cannot be used forever. वो हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं एंड हम उनको हमेशा के लिए यूज़ नहीं कर सकते. Minerals and metals are examples of non-renewable resources. If we use minerals and metals in unlimited quantity, if we use them without thinking, they will be not forever. They will be finished. Fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gas are also some examples of non-renewable resources. If we use coal, petroleum, and natural gas, it will be finished one day. So they are non-renewable. They are exhaustible. Children, what are fossil fuels? Fossil fuels are natural fuels formed from the remains of plants and animals buried deep inside the earth. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं. और ये फ्यूल्स कैसे बने थे? बाय व्हेन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरीड डीप इनसाइड द अर्थ. मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो ज़मीन के नीचे दबे रहे और हीट और प्रेशर की वजह से दे कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल एंड वी यूज देम नाउ. सो it takes millions of years to form fossil fuels. That's why we must use them very carefully. Uses of natural resources. Things that we use in our daily life are derived from natural resources. जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हम कहाँ से डिराइव करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से. डिराइव मीन्स ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम अ सब्सटेंस. किसी चीज़ में से कोई चीज़ ऑब्टेन करना, गेन करना.
So things that we use in our daily life are derived from natural resources. Natural resources से मिलते हैं हमें जो भी चीज़ें हम अपनी daily life में use करते हैं. Some resources can be used directly while some need to be changed from their natural form before they can be used. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, बट देयर आर सम थिंग्स जिनकी नेचुरल फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ता है ताकि हम उनको यूज़ कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली. वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर. This is done by building dams across rivers. What are dams? This picture is picture of dam. So dam is an artificial barrier, a structure built across a river. River के across हम एक structure बनाते हैं ताकि उसमें पानी को रोक सके और वो पानी बहुत ही हाइट से नीचे गिराया जाता है टर्बाइंस के ऊपर, and then hydroelectricity is produced. So this is done by building dams. Hydroelectricity is produced by building dams across the rivers. Fossil fuels need to be refined before they can be used. Fossil fuels को use करने से पहले उन्हें refine करना पड़ता है in the refineries. What is the meaning of refining? Refine means making a substance pure by taking impurities out of it. जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसमें से पहले हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं. लाइक इफ़ वी गेट पेट्रोलियम, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है. दीज आर नॉट इम्प्योरिटीज़, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, बट देयर आर मैनी थिंग्स जिनमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो उनको हमें रिफाइन करना पड़ता है. पेट्रोल, kerosene and diesel are obtained from fossil fuels. ये सब हमें fossil fuels से मिलते हैं. Even minerals need to be separated from their ore before they can be used. और जो minerals हमें मिलते हैं like iron, gold, silver and many other copper, many other minerals and metals, they need to be separated. उनको हमें उनकी और से separate करना पड़ता है. और क्या होती है? What are ores? A naturally occurring substance from which metals can be obtained. Ores हमें basically rocks के रूप में मिलती हैं और उनमें से हमें metals को separate करना पड़ता है. So this is picture of some ores and they look like rocks, but there are minerals and metals, एंड वो मिनरल्स और मेटल्स हमें और से सेपरेट करने पड़ते हैं ताकि हम उनको यूज़ कर सकें. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, डियर चिल्ड्रन. हैव अ वंडरफुल डे.